Yeah. Let's start with agile again. What is agile? Because last I was not able to hear thing O- anything properly that time. Okay. Agile is a methodology, uh, Mhm. one of the methodology while developing this software. It is divided in small parts, or we can say models. Mhm. And it's, I can't recall more than. Okay. So no worries. What is the difference between traditional waterfall model and agile? The difference, major difference. In agile model, it's continuously coding and continuously testing. But in other cases, we have follow the steps, means sequentially steps we are following. Mhm. And agile model is uh, better because of the other methodologies, because it's continuously developing and continuously testing at the same time. Mhm. Mhm. Okay. So what is the major difference between smoke testing and sanity testing? In smoke testing, we directly test uh, whatever the our major functionalities, is there na? We are testing those things. In sanity testing, we test those things which is earlier or uh, previously marked as a bug or reported as a bug by the tester. Then after that, when the developer has fixed that issue, and uh, after that we will uh, use that testing, let's perform that sanity testing. What is the difference between regression testing uh, and retesting? Regression and retesting na? In Mhm. regression testing, means we combine the different module, and then we perform regression testing. In a regression testing, suppose there is a login functionality and forgot password is there. So we combine the both model, and then we perform the regression testing. In retesting, uh, when any bug is reported or any defect is reported, then when the tester is reported that issue and developer fix that issue, after that we perform retesting. Mhm. So what is the difference between sanity and retesting then? Mm, in sanity testing, we perform the important or major whatever functionality our we test. Sorry, in smoke testing we are doing. In sanity testing, So the difference is sanity and sanity and retesting. So the difference sorry, is you are about yeah. So sanity and retesting, the major difference is we in retesting we test specific field test cases, and in yes, sanity whatever we bug change we and the reported. related areas. We change with the we test the changes areas like some small button has been introduced or some or little enhancement or bug fixes has been done, and we also test the related here and there part. So that is the major difference Okay, between them. It's okay, it's got it. it's mostly retesting is mostly we do for defect fixing, and um, Mhm. in the insanity we do the minor changes, enhancement and fixes, or some environment changes can be some Yes, config file can be also get changed. No issue.
So actually, most of the thing the people get confused on here, but because most we do similar approach, so but little bit difference are there. So yeah, so Okay. next thing, what is the static testing and what is the dynamic testing? Because they are the major types of testing, functional testing when we do that. These are the two important things. Um, I can't recall it, but I think static testings have some predefined rules, and in predefined functionalities or predefined rules, I think so, Mhm. but I can't recall it right now. Verification and validation. Verification and validation, it's used in V model. Mhm. When we are building our build up our application or software, that time we are using verification, and once it's developed, then Mhm. we perform the validations. Yeah, correct. That is absolutely correct. But we can little bit more Mhm. idea that verification we do what you told is correct, and after that someone asks for the verification. So we do with um, when we don't execute our code first as thing, and as per we the also do customer's study. requirement. Yeah, I'm Mhm. just giving you, and also we Okay. do on the document level or code review Yes, level. yes, Validation, we actually yes. execute Customer our test our requirement. complete project. Definition was correct, but we need more Yes, examples because we are working professionals, so we need to be give some examples. We are not just college correct. grads, so that we can just explain in Yes. simple definition. Because we are working and we are using these Okay. things on daily basis, so we need some examples or something like that that should be look like that we have hand-touch knowledge. Yes. Okay, yeah. So, uh, what is STLC? Software test life cycle, Life cycle. STLC. Yes. Hmm. STLC, it's mm, in we are using this STLC in while testing our software Mhm. or Mhm. application. Okay. When we log any error or any bug fix, na, in we find out any bug in application, Mhm. then the STLC is started. Means that time we use that STLC phase. It start with the new new phase, means bug, when reported the bug, na, that time it start. Okay. After So, that it's what are the move phases to of STLC? And which document we STLC prepare? have sorry. What are the phases of the STLC phases? Like we have phases in SDLC, no? So we have STLC have, phases in. yes, yes. In STLC we have a new phase. It start with a new, when Mhm. any error or bug is reported, then it's next is uh, assign phase. It's in assign phase, the bug or error is assigned to the Mhm. developer. Then developer open that issue. After that, developer work on it and fix that issue. Then it's again Okay. Then found what is the any defect life issue cycle? into that What is the defect life cycle? defect life cycle. STLC and defect life cycle is the same. No, actually it is not, but no worries. Um, it is not same. It is little bit different. Defect life cycle, we only Okay. concentrate on that one defect. In SDLC, we concentrate on complete testing cycle. What is the entry criteria? Mhm. So, Okay. requirement entry criteria, then test case development, environment setup, test case Okay. execution, pass or fail. Then after we complete do the our two doc we created, mostly traceability matrix, Okay. or we go with the defect Okay. matrix. Then after that we calculate all the defect, major defect workload. Then we get exit.
and then Oh, we do the QA sign off. okay. If these words we have to use in keywords that this make the build documentation, test cases, development. We have to use this abbreviation in our interview that present you very strong on the table. Okay. Okay, Got it. so yeah, so what we can say? What is test? What sorry, principle of mm, sorry, testing principles. What are the testing principles? Sorry, I can't recall it. No worries. So what is ad hoc testing? What is testing? What is ad hoc testing? Ad hoc testing. Ad hoc. Okay. Ad Yeah. hoc testing, it's perform when we have some extra time. That time we perform ad hoc testing. Uh, in ad hoc testing, there is no any means thumb rule is there, any thumb rule. So we just perform testing, like and we try to find out bug. Okay. Okay. So what is the difference between monkey testing and gorilla testing? Okay. In a monkey testing, there is no any uh, criteria is there, but Mhm. gorilla testing there is have some predefined uh, rules are there, and in monkey testing we uh, uh, randomly testing, but in um, gorilla testing we have some predefined set predefined rules are there. Yeah, this is correct, but sometimes it get confused. So ad hoc testing, we don't have any predefined rule. What we do in monkey testing, we test all application. Like we have, if we log on Whole any e-commerce application. application, so login भी test Yes. करेंगे, account will be test. We will also test other thing, payment, ad card, सब कुछ. But Yes. in gorilla testing, we will only concentrate on payment. That anyhow I have to get some bug from payment side. Yes. Yes. So we concentrate on only one thing, one model. Okay. Sure, Santosh, can you share your screen? We will start with SQL part now. Sure. Sharing my screen. Sure. Shall I close this all? No worries, you can. You can editor. You can use editor as well if you have editor or something like that, or if you want to go Okay. with the editor part, I'm okay with that. No problem. Or notepad, anything will work for me. Okay. Okay. Shall we continue from here? Yeah. So in SQL, what are the truncate versus drop? What are the definition of both? Okay. In truncate, we can delete the record from the table. Mm-hmm. Uh, and in drop command is used for drop the table from the database. Means when we you perform the drop na, then the whatever the structure of our table na, it's not present. And but in truncate, our data is deleted, but our structure of the table it's present in a database. Actually, okay. Is it okay? Mhm. Yeah. Okay. Yeah, drop include remove all the structure and truncate we have the data remove but structure remove. Yeah, Okay, correct. structure is What are present. the joins are there? What are the joins are there Uh, in SQL? yeah, joins.
joins are used for joining the multiple table, and Mm-hmm. we get the uh, get the record from the two or multiple tables. There Mm-hmm. is a major join type. There was some network issue, I guess. So right now, so yeah, Okay. sorry, can you explain again what is the what are the joins are there? So I understand that you told me that, which I have heard, that we have to do uh, relation with multiple tables, Okay. two or more tables. So on which criteria Mhm. we do relations in two table if we have two table? By using the join command, we Mhm. perform means like if there is employee and employee location table is there, so uh, uh, we miss uh, sorry, by using the join we can combine two tables, and we Mhm. can get the expected result uh, Mhm. by using the joins. Okay. So actually, Santosh, ना हमें ऐसा explain करना, we have to explain like that कि uh, Mm. we used to join to two table, which is correct, but on which criteria? We have to use many column ID, or that may be a, uh, they may be a foreign key table, parent table, Yeah, primary key, or primary can be a foreign key into child table, like that. child We table, have yes. to explain, so it will be good. But you know the thing, that is not a problem. Okay. So um, Yes. Okay. so can you write one query? So Yes, you please. have just you have there is one record. Okay. See, there are the multiple record with same name. Okay. Like we have Mm-hmm. one table, the Mm-hmm. table of employee ID, and Mm-hmm. we have multiple Santosh, Santosh Patel, Santosh, anyone. Okay. Their last name can be different. Okay. Then what we have to write? Uh, we have in our table structure we have Mm-hmm. two things: first name, last name, and salary. These things. Okay. So we have to write the total. I'm just giving you the schema as well Okay. of this table. First name, last name, and First name, last name, employee ID, and salary. okay. Hmm? Okay. This is the schema. And we have to write the query, find the total salary, sum of the salary with name Mm-hmm. Santosh. Okay. Yeah. Yes. Mhm. Is it two questions or it's one? One question, one question. It is the employee table. Okay. We have employee ID, first name, last name, and salary. So if we have to write one single query, that Mm-hmm. total sum of all salary, total salary, which Mm-hmm. their first name is Santosh. Okay. The table name is employee. Okay.
and we have to print two things: first name and salary. Okay. First name and salary. Mhm. And total salary also we have to count now. Total salary. No, they are giving you a hint. So there is F1 aggregator function called sum, Yes, some. and you can use alias as sum as Yes, total salary. as You can print. We have to print total salary as well, na? So as total salary. sorry, I think it's not working. Yeah, Santosh salary we can consider that from MP where first name No, like not okay. No, yes. it will work, but we have to change something like that. We don't use to like function because we are exactly printing Santosh. So we can use Okay, we are where direct uh, we name. can use directly We where can perform like okay, okay. Like where Santosh then we Santosh. can. We can use directly where. Hmm, And the total salary, okay, this will work, no? yes. So I consider it. I have to write the query like where name is start with yes. no, no, That's no, 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 no. Okay, yeah, sometimes it's happen. No yeah. worries. So now, can you write one queries that is of third highest salary in a table? In same table, you can consider Okay. um, Mm-hmm. we have third highest salary. Yes. Select. mm, s- just auxiliary from employee. Uh, I have used limit and sorry, I forgot that. We have to No use worries. We have to limit. use subquery. We have to use subquery. No worries. We will connect on that. Subquery और rank से हम कर Mm, सकते हैं, but no worries. yes. So, but this is very uh, important interview Yeah, question. yeah. It's majorly asking question in interview. I don't know from why from last 5 to 6 years I always see the people they ask only same question because they have to check your two knowledge. Your either you are good with your query optimization, either you can use subqueries. So Mm-hmm. subqueries भी बहुत काम आती है, but mostly people to optimize we go with the ranking part or Yes. indexing part. That is another approach. So yeah. So one more thing, one more last query I have to ask to you. So Okay. that is एक टेबल है जिसमें ना मैनेजर की भी आईडी है, Okay. मैनेजर मैनेजर भी है और ओके Okay. Manager ID we have. ओके एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी ओके ओके एम्प्लॉय ओके मैनेजर आईडी एंड Mm, एम्प्लॉय आईडी तो okay. एम्प्लॉय आईडी विल बी द सेम विद मैनेजर आईडी मतलब मैनेजर की जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो मैनेजर आईडी सेम होगी एक ही टेबल में
ये हम Okay. the concept we have to use self join, that hint I am Okay. giving. So what we have to Mm-hmm. print, that the manager ID, employee ID and salary Mm-hmm. name, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. और वी हैव टू प्रिंट फाइंड द एम्प्लॉइज हु सैलरी इज ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी. यहाँ पे दो कॉलम नहीं है. जैसे बहुत सारी जगह दो कॉलम हो सकता है कि वी कैन क्रिएट मैनेजर का कॉलम, मैनेजर्स कॉलम्स आर डिफरेंट बट इन सेम डिपार्टमेंट, दे आर इनटू सेम डिपार्टमेंट एंड वी हैव टू चेक दैट. ओके, नो, डिपार्टमेंट से भी कंफ्यूज मत हो क्योंकि ग्रुप वही लग जाएगा. यहाँ पे डायरेक्टली बस यही क्वेरी लिखनी है कि कितने एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी मैनेजर से ज्यादा है. Okay. We have two table, na EMP table and manager table. नो नो, एक ही टेबल में है. Okay, in one table. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेल्फ जॉइन. Okay. Uh, is it correct? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू डू इट. नो नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट. एक्चुअली वी हैव टू सेल्फ जॉइन. जॉइन में जॉइन लगाना था. Okay, self join we जैसे have. आप क्वेरी से भी कर सकते हो. But you told me the data is in single table, na? हाँ, तो सेल्फ जॉइन से भी हो जाएगा ना. सेल्फ जॉइन यूजली हम एक ही टेबल पे जब जॉइन यूज करते हैं ना, सब Mm-hmm. क्वेरी से होगा बट ऑप्टिमाइज बेस का होगा सेल्फ जॉइन का. सेल्फ जॉइन से का क्या होता है कि हम एक ही टेबल में जब जॉइन लगाते हैं पर्टिकुलर दो आईडीज पे, दो कॉलम में आईडीज पे, तो Okay. कोई बात नहीं, इट इज करेक्ट. नो सॉरी, इट इज क्वेरी इज नॉट करेक्ट बट इट इज करेक्ट दैट वी हैव टू लर्न सेल्फ जॉइंस एज वेल. सीक्वल में हम अभी ओवरऑल फीडबैक कैसा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा लगा मेरे को संतोष आपका. आप पैनिक नहीं हुए Okay. इंटरव्यू में. और जो मैंने आपसे कुछ बस ये है कि आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देना है. और जैसे कि जैसे एजाइल में ना हम थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो गए थे. तो एजाइल में क्या Yes. हुआ था कि हम बाद में मैंने आपको पुश किया तो हम आ गए थे. बट क्या होता है ना कि एजाइल हो गया Mm-hmm. का कोई बहुत बेसिक्स का कोई क्वेरी अगर वो क्लियर है ना, तो पहले अटेम्प्ट में ही 30 मिनट के इंटरव्यू में पहले पहले आप 3 मिनट के अंदर ही बाहर हो जाते हो. Yes. तो फिर कहीं इंटरव्यूअर आपको बस खाली हल्का सा हौसला देगा, 10-15 मिनट टहलाएगा क्योंकि आपको बुरा ना लगे, और वहीं से आप उसको सीधे वो रिजेक्ट मार के निकल जाएगा. तो हमारे पास टाइम नहीं है Yes. ना, होता नहीं है क्योंकि. और तो हमें पहली बात तो हमें पढ़ना कैसे है कि हमें दोबारा रिवीजन की जरूरत है टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज की. Yes. और हमें आंसर कैसे देना, हमें कीवर्ड्स यूज करना है. बिल्ड, डिप्लॉयमेंट, Yeah. Technical word टेस्ट we have केसेस, to use. टेस्ट डिजाइन. Yes. स्प्रिंट में इटरेशन, एजाइल में क्या होता है इटरेशन, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है हम स्प्रिंट के फॉर्म में करते हैं. तो ये ना हमें
वर्ड्स चूज करना है। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। और Yes. बी करके हमें बोलना वी हैव टेस्टेड दिस, वी हैव डेवलप्ड दिस, फॉर एग्जांपल वी हैव, एक एग्जांपल, एक अपना का प्रोटोटाइप बना लो कि मेरे को एक ना ई कॉमर्स एप्लीकेशन पकड़ के चलनी है, Mm-hmm. उसके एक्सप्लेनेशन में। और मान लो इंटरव्यूअर को लगता है कि तुम्हें खाली इसकी नॉलेज है, तो हमें बोल देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं हर चीज टेस्ट कर लूंगा, बट फॉर द पर्पस विच वी आर यूजिंग, ऐसा करके, या अपने एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है तो उसको पकड़ के आप उसको एक जेनरिक वे में बना लो, कि एक ही चीज पकड़ के चलोगे ना तो इंटरव्यू भी कंफ्यूज नहीं होगा। Okay. जैसे कि यहाँ पे हमने राइल में गलती करी, एसडीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम Mm-hmm. डिफरेंट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने चले गए थे। Okay. डिफरेंट लाइफ साइकिल में पूछता है एसटीएलसी के बाद आपने पहले एक्सप्लेन कर देता डिफरेंट लाइफ साइकिल। तो अब उसका क्या होगा Yeah. ना, समझो देखिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या होगी हमें, Mm-hmm. कि हमारा ना, हम अच्छा, आपको ओवरऑल इंटरव्यू खराब नहीं है। सीक्वल Mm-hmm. पार्ट, देखिए सीक्वल पार्ट में तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीक्वल क्वेरीज ये कि आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं करी है, यू नो द थिंग बट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। Yes. तो Yeah. Before some time also, means I looked at the query of max salary, third max salary, but I हमें forgot. रिवाइज नहीं करना ना, हमें उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगी। मैक्स सैलरी दो तरीके से भी लग सकती है। मैक्स सैलरी वाली सैलरी, या Yeah. तो आप It's बार बार सब क्वेरीज लिखो या yes. रैंक पढ़ लो। बार बार आप मैक्स रैंक से सैलरी ज्यादा इजी चेक है। कर सकते रैंक हो से डेंस और रैंक, रैंक करके एक वन मेथड है जो अनदर। रैंकिंग को करता है, कर सपोर्ट। रैंकिंग पढ़ोगे ना, इंडेक्सिंग पढ़ोगे तो उससे भी हो जाएगा। बट अगर उतना भी नहीं जाना है, इंडेक्सिंग और रैंकिंग जनरली यूजुअली लोग पूछते नहीं है। बट फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट कंपनी हो गई, सपोज को आप मास्टर कार्ड में इंटरव्यू दे रहे हो संतोष, अब Yes. सबको ही पता है कि सब क्वेरी से या इससे निकाल के सेकंड सैलरी आ जाएगी। व्हाट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन यू? Yes. तो सो दैट इज अ थिंग ना। तो दैट इज अ थिंग। तो बाकी टेस्टिंग में आपका ये है कि टेस्टिंग में मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको चीजें नहीं पता, बट यू नीड थोरो रिवीजन। मे बी ये इंटरव्यू, काम करने का काम अलग होता है और इंटरव्यू का केस अलग होता है। कोई आपके एप्लीकेशन मैनुअल टेस्टिंग में लोग डेफिनेशन से आपको जज करते हैं, क्योंकि या टेस्ट केस डिजाइन थे। देखिए मेरे को टेस्ट की डिजाइन का भी मैंने अभी वो पार्ट था, बट शायद Mm. टेस्ट केस डिजाइन लेवल 2 में लोग चेक करते हैं। तो Okay. अगर जब हम रिमॉक करेंगे, मुझे पता नहीं यहाँ पे एडमिन का एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रूल है, बट Mm-hmm. अगर जब हम रिमॉक करते हैं, मैं कंसिडर करूंगा आपको रिमॉक के लिए, और Mm-hmm. आपके फीडबैक को भी दूंगा। तो यही है कि ओवरऑल मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन, बट मोर क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और सीक्वल Yes. पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है। इफ यू Correct. वांट, इफ यू वांट, सो वी कैन जस्ट करेक्ट टुगेदर, हम सीक्वल पे भी काम कर लेंगे। लेकिन मोस्टली टेस्टर्स का ना सीक्वल बहुत अच्छा नहीं होता है। इवन ऑटोमेशन साइड से भी, मैं ऑटोमेशन साइड में भी लोग बहुत काम करते हैं, बट Mm-hmm. बेसिक्स को भी आनी चाहिए और Okay. जॉइंट्स आना चाहिए। अगर Mm-hmm. रैंक और इंडेक्सिंग नहीं छोड़ भी देते हैं तो Mm-hmm. बेसिक्स क्वेरीज आनी चाहिए। Okay. बट आज के डेट में क्या है कि कंपटीशन बहुत है, तो पीपल विल Yes. कंसीडर मोर नॉलेजेबल पीपल देन यू। Correct. ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, तो टॉपिक कोई और पढ़ के आएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। Yes. तो कोई बात नहीं, हम हम इसीलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो Mm-hmm. ओवरऑल का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मेरे को, बट कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको रिजेक्शन, दो तीन जगह रिजेक्शन का लगा है। पहला तो Okay. एक्सप्लेनेशन का, Mm-hmm. और दूसरा मेरे को ये, बाकी कॉन्फिडेंस का भी ठीक है, रिजेक्ट, और बाकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और आपको और डिटेल करना है। अ, Mm-hmm. जैसे कि कीवर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि Okay. अ, और कंफ्यूज, मतलब एच टी एल सी, ये जो सारी मेथोडोलॉजी है ना, एच डी एल सी, ये रॉ टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन और सैनिटी आपको क्लियर था, स्मोक और सैनिटी का, और Mm-hmm. रिग्रेशन का भी है, बट ना आप उसमें इस तरीके से यूज करिए, बिल्ड यूज करिए। जैसे Okay. कि इनिशियल जब बिल्ड आते हैं तो हम Yes, चेक we करते have हैं to फंक्शनैलिटी show देखते हैं कि them like हाँ, I have हाँ, worked in तो this. हम क्रिटिकल फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं स्मोक में, कि Mm-hmm. लॉगिन हो गया, ये हो गया। हम ओवरऑल डीप में टेस्टिंग नहीं करते। तो सामने वाले को ना आप पहले एक्सप्लेन कर दोगे Mm-hmm. तो सामने वाला पूछेगा ही नहीं। Okay, okay. और जितना आप इंटरव्यू पकड़ के चलोगे ना, Mm-hmm. उतना आपके चांसेस सिलेक्शन के हो। अगर सामने वालों को आपने लीड दिया, आपने Yes. कुछ एक वेगू स्टेटमेंट दे दिया और उसने लीड लेना शुरू कर दिया, तो आपको, और होता भी हम इंटरव्यू में, देखिए आप भी कोई भी हो, हम भी जब भी इंटरव्यू देते हैं तो Mm-hmm. कहीं ना एक चीज रहती है कि एक नर्वसनेस रहती है। तो Yes. वो होता है कि अगर हम इस नर्वस को हटाने के लिए ना, हम एकदम कंक्रीट और डिफिनेशन देंगे और उसको एग्जांपल देंगे ना, तो पहली बार में तो सामने वाले को बंद कर दिया। Correct. तो वो सामने वाला खुद सोचने मजबूर हो जाएगा, पूछो क्या। और फिर उसका Mm-hmm. इंप्रेशन ये हो जाएगा आपका कि हाँ ठीक है ये, देन वी कैन गो अहेड। और Correct. फिर वो हो जाता है। तो अपने को ना रिजेक्शन वाला पार्ट कम दिखाना है। Yes. डेफिनेशन की एजाइल हर जगह ही हो रही है, मुझे नहीं लगता कि जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी है 10-11 साल में, मैंने कोई और मॉडल Mm-hmm. पे काम किया। Okay. 98 जगह लोग एजाइल पे ही काम कर रहे हैं। Correct. चाहे वो
हो चाहे ना हो, मतलब अगर कोई बहुत छोटी कंपनी स्टार्टअप है तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन चीज़ों में उन लोगों को बहुत रिग्रेस काम करना होता है। बट कोई भी एमएनसी है, ठीक कंपनी है, तो दे विल गो विद एजाइल मॉडल ओनली। यस, बाकी चीज़ें संतोष, बाकी इस पे प्रैक्टिस अजाइल बहुत मॉडल ज़रूरी यूज होता है ना मोस्ट ऑफ द है। कंपनी। हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी अच्छे से, जो भी पीपीटी वीपीटी आप अच्छे से पढ़ो, कुछ भी होता है तो वी कैन कनेक्ट, श्योर। वी कैन कनेक्ट एज पर्सन एज वेल। तो बाकी ठीक है, मैं कंसीडर, मैं बोलता हूँ कि यू के वी कैन कंसीडर एज अ रीमॉक। तो टेक सम टाइम, प्रिपरेशन में कुछ भी होता है पीपीटी में।